So we have this 5 months program, and this 5 months program is all about implementation. ओके जैसे मैंने आपको साइंस बताई है पिछले 4 दिनों के अंदर, अभी 3.5 पौने 4 दिन हो गए हैं. सो अब मैंने आपको ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी मैंने आपको टेक्निक्स, बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे ग्रे हैट्स, डार्क हैट या ब्लैक हैट टेक्निक्स, या बहुत सारे टूल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं. ओके नाउ unless you implement that, you will not be able to get results. आपके पास आइडिया आ गया, नॉलेज आ गई, ज्ञान आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मेरे को जैसे मैसेज आ रहे हैं, अब तो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब फेसबुक है, मेरे पास गूगल है, मेरे पास लिंक्डइन है, मेरे पास वीडियो मार्केटिंग की साइंस है, अब मैं कुछ भी बेच सकता हूँ. ओके अब ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर एक्चुअल सेल तभी होगी जब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे. एंड 5 months प्रोग्राम इज नथिंग बट ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन. ओके, ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन. Now, one of the past batch participants who attended my 5 months program had also been to Harvard University. He said there is a 6 days program, on-campus program at Harvard University, and they charge 8,67,000 rupees, and the cost of flying and stay for 6 days is not even included in this. Okay, so don't worry. What he said कि आपका जो 5 months program है, that is far ahead as far as the value of the program is concerned, far ahead of the program that he attended in Harvard University. Now, I'm not going to charge you that much. So my fee for 5 months program is 3,75,000 only. Okay. Now, what do you get in 5 months program? So there is this breakdown, 21 weeks breakdown of week by week. Now, the broader perspective of 5 months program is basically that पहले हम 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर आपको मैं प्रिपेयर करूंगा, ऑल द वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स, ऑल द बिजनेस ओनर्स, सो दैट कि आपकी पहले 2-2.5 महीने के अंदर लीड फ्लो बिल्डअप होना शुरू हो जाए, आपकी लीड्स आनी शुरू हो जाए. एंड देन इन रिमेनिंग लास्ट पार्ट ऑफ द 5 months program, okay, I'm going to start going completely on sales. Okay, it is going to be a huge eye opener and a huge sales turner for you. And if we go by week, so in week 0, I'm going to talk about कि आपको जब ये 5 months जर्नी करनी है, what is the best way to extract maximum value. So I'm going to talk to you about 9 critical business numbers. Now, even if you are on any kind of business, e-commerce, online, offline, distribution, B2B, B2C, जो भी आपका business हो, अगर आपको ये 9 critical numbers के बारे में मालूम नहीं है, God help you. You cannot grow your business if you do not understand these 9 critical numbers. So once you know the 9 critical numbers, you will start understanding whether, based on this 5 months science that we're going to discuss, your business is growing, staying at the same, or it is declining. So it is extremely important for you to understand those 9 critical numbers. And then there will be some technical implementations in the journey of 5 months as well. So you need to hire a person called digital marketing manager. अब ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का क्या प्रोफाइल होगा, क्या सैलरी होगी, कैसे इसको हम हायर करेंगे, सही टैलेंट को कैसे हम लेंगे, कहां से लेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सारा का सारा मैं डिस्कस करूंगा. क्या इंटरव्यू होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट. एंड देन आफ्टर वीक 0, आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक of about 3 weeks. Now, this is not going to be a vacation or a holiday. I'm going to give you a specific challenge. This is known as 30 task challenge. I'm going to start preparing you for this 5 months journey, and I'm going to give you the biggest and the most powerful tool on week 0 itself. Okay, and I'm going to tell you to start using this tool and complete 30 specific tasks in the duration of 3 weeks. Okay, so आपको इन 3 weeks में क्या करना होगा, 9 critical numbers आपको निकाल लोगे, जो कि आधा 1 घंटे का काम होगा, जो आप अकाउंटेंट के साथ में या अपने अकाउंटिंग के साथ में बैठ कर निकलवा लोगे. आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हायर करना होगा, जिसकी साइंस में पूरी बताऊंगा. हाँ, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि आई एम नॉट दैट टेक्निकल, तो मैं टेक्निकल कैसे जज करूंगा. सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू डू द टेक्निकल इंटरव्यू ऑन योर बिहाफ. इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग द टेक्निकल इंटरव्यू ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट, डोंट वरी. ओके, अब उसके बाद जो आपको 30 टास्क बोले हैं, आप वो 30 टास्क कंप्लीट करेंगे एंड योर गेम इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली, फॉर श्योर, गारंटी. मेरी गर्दन पकड़ के झूल जाना, अगर वो 30 टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी गेम चेंज होती पलटती नहीं दिखनी शुरू होती. Okay, then in week 0, we are going to start developing our strategy कि आपके स्पेसिफिक बिजनेस, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होंगे, कोई B2B में होगा, कोई B2D में होगा, कोई B2C में होगा, कोई X में होगा, कोई एक्सपोर्ट्स में होगा, कोई Y में होगा, कोई Z में होगा. सो हर एक के लिए सेम स्ट्रेटजी, सेम प्लेटफॉर्म, सेम सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, जो हम 4 दिन में देख ही चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू पर्सनली टेल यू कि जो हमने 9 बिजनेस ग्रोथ मॉडल्स हमने डिस्कस करे थे डे 1 के ऊपर, वो 9 बिजनेस ग्रोथ मॉडल में से आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर से लोअर हैंगिंग फ्रूट या लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हैं, सो दैट यू स्टार्ट डिप्लॉइंग दोस लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स and start generating results sooner than later, immediately. Some of the people have started generating results within the first month of the workshop starting up, and a couple of people have actually started getting results even before the 5 months workshop started, based on the 4 days session that we have done thus far. Okay, then in week 2, I am going to talk about content.
तो जो मैंने आपसे फियर ग्रीड लस्ट के ऊपर बात करी है और जो मैंने आपको प्रॉब्लम एक्सपेंड द प्रॉब्लम की साइंस दी है, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जैक्ट सेम साइंस एंड टेक इट टू an entirely different level altogether, where you're going to be blown away completely कि यार कंटेंट ऐसे भी यूज हो सकता है, इस तरीके से भी यूज हो सकता है, या मैं एक छोटी सी सिंपल स्ट्रेटजी इस पावरफुल तरीके से साथ में डिप्लॉय कर सकता हूँ, where I can completely explode, bulldoze, flat out destroy maybe your competitors as well. Maybe how you can use this content strategy to remove price objections completely from the minds of your potential buyers. Then we're going to talk about in week 3 about how to get work done. आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होंगे, आपके साथ इवेंचुअली कुछ लोगों के साथ में सेल्स टीम होंगी, कुछ लोगों के साथ नहीं होंगी, क्योंकि कुछ स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं उनके पास सेल्स टीम नहीं होगी, मगर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर तो चाहिए होगा। और साथ ही साथ में हो सकता है आपने कोई एजेंसीज हायर करनी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हो सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, हो सकता है किसी XYZ क्रिएटिव सर्विसेज के लिए आपके पास चाहिए होंगे आपको एजेंसीज। अब इनसे काम करवाना कैसे है? ट्रस्ट मी गाइस, more than 99% business owners do not even know how to get work done. ओके, सो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या टूल्स होंगे, काम करवाने के लिए भी जो है राइट टूल होना चाहिए। अगर आपके पास राइट टूल्स नहीं है तो ट्रस्ट मी गाइस, आप काम नहीं करवा सकते। जस्ट टू शेयर विद यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपने किसी को वेबसाइट बनाने के लिए हायर करा हो और वेबसाइट ना टाइम से बनी हो, ना जिस कॉस्ट के अंदर बात हुई थी उससे ज्यादा, उससे कम कॉस्ट लगी हो, उससे ज्यादा ही कॉस्ट लगती है, हमेशा उससे ज्यादा ही टाइम लगता है। और फिर क्या आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस करा है कि वेबसाइट जो है खत्म ही होने को नहीं आ रही और पैसा लगता ही जा रहा है, टाइम लगता ही जा रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, वेबसाइट खत्म होने को नहीं आई। या कोई आपने कोई टूल या कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हो, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता है, खत्म होने को ही नहीं आ रहा। क्या आपने से कभी ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस करा है? Okay, so why does that happen? Because we do not know how to get this thing done, how to get work done from our team or from our agency. Okay, so in this context, next time chalte hain, then we talk about after we have learned how to get work done, now we're going to start doing some actionable stuff, some real on ground stuff, starting from landing page strategy. ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो लैंडिंग पेज हमने डे 2 पर डिस्कस करा था, उसको हम अब उसको स्टेरॉइड्स के ऊपर डालेंगे, उसको हम एंटीबायोटिक्स नॉट एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स के ऊपर डालेंगे, एंड देन वी गोइंग टू स्केल द पावर ऑफ लैंडिंग पेजेस। ओके, अब लैंडिंग पेजेस से आरओआई कैसे जनरेट होती है, मेजरमेंट सिस्टम कैसे होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, गोल ट्रैकिंग, XYZ ट्रैकिंग, सारा का सारा ये कैसे होगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड your digital marketing manager or your agency is going to start working on that based on the science that we've discussed, and you'll be blown away. You're going to be blown away by the results that your landing pages are going to start producing for you. Now, I've shown you that landing pages in the past have generated 20 crores, 15 crores, 27 crores, 37 crores, 39 crores, maybe 50, 60 lakhs business for revenues for other businesses as well. So maybe you can replicate some of those landing pages, which I am going to provide to you, which I've shared with you in the full day session as well. And then you can start creating your landing pages based on the science and based on the examples I'm going to share with you. Then in week 5, it is going to be all about how to kill your competition. आपको याद होगा डे 2 के ऊपर हमने फुल डे के अंदर इसके बारे में बात करी थी। सो इट वाज बेसिकली द लाइट वर्जन और लाइट एडिशन ऑफ हाउ यू कैन किल, बुलडोज, फ्लैट आउट डिस्ट्रॉय योर कंपटीशन। तो मैंने आपसे 6 या 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी। एक्चुअली देयर आर 29 पॉइंट्स ओवर व्हिच यू कैन फिगर आउट हाउ यू कैन किल, डिस्ट्रॉय एंड फ्लैट आउट बुलडोज योर कंपटीशन। ओके, देन इन वीक 6 एंड वीक 7, ओके, इज गोइंग टू बी अबाउट गूगल एड्स। हमने डे 1 के ऊपर गूगल एड्स के बारे में बात करी थी। I gave you an insight about how and what Google Ads can do and to be able to help you grow your business by generating more leads, by generating more sales, depending on whether you are a lead generation ecosystem or you're an e-commerce ecosystem. Okay, so in this we're going to talk about how once again you can put Google Ads on steroids, और क्या-क्या strategies हैं, किस-किस तरह का reporting system होता है, एजेंसी की गर्दन कैसे पकड़ के काम करवाना है, ये सारी की सारी साइंस हम लोग डिस्कस करेंगे। Alright, then in week 8 and week 9 I'm going to put LinkedIn on steroids. Okay, so LinkedIn की साइंस अभी हमने डिस्कस करी है। LinkedIn के अंदर आपने देखा होगा कि by default the default search system is completely flawed and broken. How it produced 90 to 93% incorrect wrong results altogether. Now imagine कि आपने कहीं से LinkedIn का नाम सुना होता और आप LinkedIn के ऊपर काम करना शुरू कर देते और आपको ये मालूम नहीं है कि LinkedIn के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 90 to 93% wrong है। What would have happened in that case? All your effort, time, energy, resources, and money would have gone down the drain because there is a 92-93% chance it would have flopped completely big time. Okay, so मैंने आपको इसकी basic science बताई है कि how LinkedIn can be utilized to grow your business, and then you automatically started experience. I think one of the participants shared that while I was talking about LinkedIn, I think it was yesterday,
before the Facebook session started, somebody said ki I had been targeting UAE Middle East customers and I had no idea how to capture those, how to catch those. And she used the exact science of connection and strategic positioning. And she said she immediately got a response and generated a lead for her business. Who is that person? Who is this person? Is she here in the session right now? Okay. Rina. Thank you, Rina. So Rina said, while I was discussing about LinkedIn, she said, I sent this message and immediately got this response and generated a lead for her business. So how cool is that? Okay. It cannot be more simpler, quicker, and faster. Okay. And guess what? You don't need to be a rocket scientist or a PhD or an engineer or MBA to be able to deploy my system, understand my system, and deploy my system. Okay. Such simplicity is there in my system. Then इन अबाउट वीक 9 वीक 10 जैसे मैंने आपको बताया, अब आपकी लीड्स जो है उसका वॉल्यूम बिल्डअप होना शुरू होगा. गूगल एड्स की वजह से आपकी लीड्स आनी शुरू होंगी. लिंक्डइन की वजह से आपके पास लीड्स का इकोसिस्टम आपका बिल्डअप होना शुरू होगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू सेल्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू यू पिच. आपके पास लीड्स आएंगी तो बात करनी क्या है, बात करनी कैसे है. अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर करा कि लीड्स आती हैं गूगल से, फेसबुक से, लिंक्डइन से. हमारी सेल्स टीम बात करती है और बताते हैं लीड्स बेकार हैं, लीड्स क्वालिफाइड नहीं है, लीड्स किसी काम के नहीं है. Trust me, guys, it is not the problem with leads, it is the problem with salespeople. They do not know how to handle those leads. And guess what? My favorite statement is, you guys call yourself as the owner or director or CEO of the company. I call you, you are heading the department of sales prevention team. What do you think? Okay. Practically, you are heading the department of sales prevention team. Okay. You don't have any idea whatsoever, most of you at least, how to handle sales and how to train your sales team and how to speak when the lead comes in. Okay. कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. आई एम गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड दिस परफेक्ट सेल्स पिच. देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर हम बात करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3 part series of sales. If you include it with positioning system, which is also part of marketing and sales, so you can maybe say second part of sales out of the 4 parts. Okay. Then we're going to talk about Facebook. तो जैसे मैंने आपको फेसबुक के बारे में बताया कि फेसबुक कैन बी यूज नॉट जस्ट फॉर B2C, विच इज द मोस्ट कॉमन मिथ, मोस्ट प्रेवलेंट मिथ. यार B2C के अंदर जो है फेसबुक काम करता है, B2D के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, B2B में, एक्सपोर्ट्स के अंदर थोड़ी फेसबुक काम करता है. So I've given you some insights about how, no matter which business segment, which industry, which product, which services you may just be dealing in, Facebook, अगर आपका वो वॉल्यूम क्राइटेरिया, आपका नंबर ऑफ डेटा का आपका क्राइटेरिया जो है ट्रिगर होता है, then Facebook can be the game changer for you. And trust me, somehow, every single time in 5 months session, somebody tells me, Facebook मेरे लिए क्या काम करेगा, Facebook थोड़ी मेरे लिए यूजफुल होगा. Those kinds of people get the best bang for their buck through Facebook. Okay, Facebook creates phenomenal results. Amazing, brilliant results, highly scalable, highly profitable results for most of the companies. You heard Manu yesterday. He said in a span of less than 3 years, he has been able to grow his business by 8 times. It is not, guys, 8% or 80%. It is 8 times he has been able to grow in a span of less than 3 years. And now he says, I'm going to double it in next 1 year. So that means we're talking about 3 to 4 years के अंदर business has grown 16 times just with the power of the strategy of Facebook marketing. And his strategy also started with 2K1W. And then there are certain other techniques, there are certain other nuances, there are certain other forks that I'm going to introduce to you in the Facebook marketing strategy. And once again, I'm going to put Facebook marketing on steroids. Okay. Then comes week 12, Twitter. Now, Twitter is a system which can help you kill, bulldoze, destroy your competition. Now, most people talk about कि Twitter से धंधा कैसे generate करना है, but that doesn't work for most businesses. I'm going to talk about 2 specific ways in which Twitter can be used. One of the ways in which Twitter can be used is how you can use Twitter to destroy, bulldoze your competition. And 2 second way is how you can use it in exhibition marketing. If you are a business who wants to do exhibitions, वैसे तो मैं आपको पहले तो मना ही करूंगा कि यार exhibitions मत करो, पैसा जला रहे हो आप. But let us say कि आपने मेरे से बात करी और आपने कहा कि नहीं, exhibitions मेरे लिए important हैं, which has happened in the past. तो अगर आपको exhibitions market करनी है, exhibitions में exhibitor के तरीके से marketing करनी है, तो उसकी क्या-क्या techniques है and how Twitter can be useful for you in exhibition marketing. I'm going to talk about that. Then in week 13, I'm going to talk about YouTube marketing strategy. मैंने भी आपको YouTube marketing strategy introduce करा है. I've given you 3 fill in the blank written scripts, done for you scripts. Okay, I've done the heavy lifting. I've done everything. All you have to do is कि अपने मेरे नाम की जगह अपना नाम डाल लो, मेरी कंपनी की जगह अपनी कंपनी डाल लो, मेरे रिजल्ट्स की जगह अपने रिजल्ट्स डाल लो, मेरे नंबर ऑफ ईयर्स की जगह अपने नंबर ऑफ ईयर्स डाल लो, मेरी नंबर ऑफ क्लाइंट्स की जगह अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स डाल लो. खत्म, खल्लास, ओवर, डन.
Okay, it is such a simple thing. I'll introduce you. So I've given you three scripts. There are several other scripts that would be there. I'm going to provide in YouTube marketing, which are completely going to blow your minds, and you're going to be amazed how simple a system could be, how amazingly easily this system can be deployed, and how amazing results, how scalable the results can be. Okay, and people have, as I've shared with you, started doubling, tripling, quadrupling, 10 times growth उनके conversion rates के अंदर, उनकी lead volume के अंदर, उनके businesses के अंदर already आ चुकी है. This is not going to be the first time I'm going to test it on you. We have already done that. Okay. Then I'm going to talk about week 14, email marketing. Now, email marketing, जो लोग मोस्टली लोग कहते हैं email marketing जो है वो तो मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ. Trust me, if you understand the science, you will realize that most of you, or probably all of you, are not doing what is known as email marketing, but what you're doing instead is email spamming. Okay? अब यहां पर कई बार आप में से कुछ लोग कहते हैं कि यार एक टाइम होता था जब ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होती थी. अब ईमेल मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव रही नहीं है. ओके, क्या आप में से कुछ लोग हैं जिनको लगता है ईमेल मार्केटिंग इज नो लॉन्गर एज इफेक्टिव एज इट यूज्ड टू बी, और maybe some of you may have a radical opinion that email marketing is dead, it doesn't work any longer. Okay, so a couple of people, Aman has already shared, yes, he thinks that email marketing is not that effective. Now, how about I give you a completely different radical change in my in your perspective? How about a situation? Listen to this very carefully, listen to this very closely, and understand this. How about a situation where your target audience beg you to send emails? They will call you names. They will threaten to abuse you. They will think you are frauds if you do not send them emails. How about that? Can you imagine a situation? If you do not send emails, people are going to think that you are fraud. People are going to think that you are a cheat company or a fraud company. Okay, if you do not send email, right? So if you understand how email marketing works, then and only then you can take the advantage of email marketing. And also let me add the statement that email marketing is the largest, yes, you heard it right, largest ROI driver. Okay, I have produced 13 times, in fact 13.7x as ROI in email marketing. So what does it mean? For every 1 rupee spent on email, I produce 13.7x returns. So for every 1 lakh rupees I spent for this client of mine, we received a revenue of 13.7 lakhs. This is one example. Then there are several other examples. If you know the science of email marketing, it cannot be, nothing else can produce better results. Okay, Facebook, LinkedIn, Google ads, all of those marketing strategies can be leveraged. And if you add email marketing to that mix, it is going to be a game changer once again for you. Then in week 15, I'm going to talk about second part of sales, which is going to be around sales objection handling. I gave you a glimpse of what are these objections. Now, most marketing gurus or sales gurus teach you that sales objections are the hints and tools which block your sales. So try to circumvent them, try to go around them, try to navigate around them. But my perspective is entirely different. Instead of thinking them as a roadblock to sales, I consider them as hints and clues that what aspect of your communication you need to improve, what aspect of your conversation, what factors do you need to talk about so that the person is going to be ready for buying from you. So objections are hints and clues. What do you need to address in your conversation, in your communication, so that the listener will become ready to buy from you? So sales objection, huge. I have developed many sales closing systems. So there are over 63, 67 sales closing systems, which a lot of marketing gurus and sales gurus talk about. But most of them are not even practical. They're not even learnable, and they don't apply. What I've done, I have actually created such an amazing system, which is so easy to understand. Practically, you can learn the entire sales objection handling science in 30 minutes. And not just that, you'll be able to understand it, you'll be able to start using it right after 30 minutes are done from 31st minute. And it is such a simple system that you can start training your sales team on that as well. Okay, I could give you amazingly brilliant strategies. Okay, two of my favorite strategies is maybe puppy close strategy, and other strategies, doorknob close. Okay, these are two very common strategies, very, very powerful, not common, but very powerful strategies I've used to capture business, to capture sales, to convert my sales from leads to sales. Okay, this works really, really wonderfully. But
आपको देखना है कि आपके बिजनेस के अंदर अगर आपको सेल्स टीम को आपको ट्रेन करना है, आर दीज द राइट क्लोजिंग टेक्निक्स दैट यू कैन ट्रेन टू योर सेल्स team and they can learn it and choreograph it in exact sequence. It may or may not be possible. So what I've done, I actually simplified the whole science. I've simplified it so much that only there are 4 factors for entire sales objection handling. You just need to understand it's a 4-step process. कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्शन के ऊपर आप ये 4-step process आंखें बंद करके आप इसको भेज दो, आपका काम हो जाएगा. Okay, just to share with you one example, one of the just batch ended last month. One of that batch participant came to know that one of the companies wants to buy cranes, and they said कि आपकी cranes नहीं लेंगे. Okay, आपसे cranes नहीं खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि आपका जो है ना आफ्टर सेल सपोर्ट या XYZ पास्ट एक्सपीरियंस या प्राइसिंग वगैरह के अंदर इशू है. So he used the exact same science of objection handling, and within about 15 minutes he wanted to fix a meeting. Within about 2 hours, 2.5 hours, जो वो पहले कह रहे थे कि आपसे बात नहीं करनी, आपसे क्रेन्स नहीं खरीदनी, within about 2.5 hours उसके पास वर्बल कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर आ गया था. Had it not been this sales objection handling science, he would have left it the moment he would have heard, यार आपसे बात नहीं करनी, आपका sales system बेकार है, after sales बेकार है. He would have left it at that. But the way he started handling this after learning the science, it was incredible. And he got the verbal confirmation of the crane. And let me tell you the perspective to get you in the perspective. Generally, these cranes start from 45, 50, 55 lakhs onwards. So it is not even a small sale I'm talking about. Big sale. Okay. Then in week 16 and 17, I'm going to talk about SEO strategy. Now, a lot of you asked me कि Manuj, मेरे पास तो वेबसाइट नहीं है, तो मैं वेबसाइट जो है नहीं है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, या मेरी वेबसाइट जो तो 7-8 साल पुरानी है, इट इज नो लॉन्गर एज ग्रेट फंक्शनल क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी ली है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, और या फिर मेरे को अपनी साइट इंप्रूव करनी है सो दैट आई कैन डू डिजिटल मार्केटिंग. None of that holds any water. आपको याद होगा लैंडिंग पेज वाली साइंस के अंदर मैंने आपको इसके ऊपर क्लैरिटी दी थी. बट अब मान लीजिए कि लैंडिंग पेज के बेसिस के ऊपर हमारे को समझ में तो आ गया कि कौन से कीवर्ड्स हैं, किस कीवर्ड के ऊपर हमारे को लीड्स मिलेंगी, अब हमारे को उसको स्केल करना है, तो इवेंचुअली आपको साइट तो चाहिए होगी उसको स्केल करने के लिए. अब वो साइंस क्या है, आपकी वेबसाइट, आपके पेजेस कैसे बनेंगे, वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट आएगा, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है सो दैट कि आपका एसईओ सक्सेसफुल हो, एंड इवेंचुअली यू विल नीड टू स्टार्ट स्केलिंग योर एसईओ सो दैट यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग फ्री ट्रैफिक इन रियल सेंस एंड स्टार्ट स्केलिंग योर बिजनेस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. Now, let me tell you, people who do not understand the science, more than 95, 96, 97% people do it all wrong, ending up burning a ton truckloads of their money, and then eventually 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद कहते हैं कि हमने एजेंसी को पैसे दिए, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, रिजल्ट नहीं आया. आप में से भी काफी सारे लोगों ने मेरे साथ ये शेयर करा था डे 1 के ऊपर कि एजेंसी को पैसे दिए, एसईओ करवाया, कोई रिजल्ट नहीं आया. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल साइंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइंस, डिप्लॉय इट सो दैट कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपने गूगल एड से डेवलप कर लिया, और उसके बाद आपने जिस पे 3 या उससे ज्यादा, 3-4 या उससे ज्यादा आपने कन्वर्जन्स निकाले, उसको हमने एसईओ में डालना है. अब ये तो आपका हो गया बेसिक साइंस, फंडामेंटल, ये क्लियर हो गया. मगर एसईओ जब स्टार्ट करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से सिस्टम्स, कौन सी स्पेसिफिकेशंस मेंशन करनी है ताकि आपके पास सही वेबसाइट आए और आपकी एजेंसी आपको सही वेबसाइट बना करके दे. अदरवाइज आपकी वेबसाइट या तो कभी खत्म नहीं होगी, या गलत बनेगी, या पैसा सारा ठुक जाएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे. So it is going to be about science of getting your websites based on the SEO strategy, SEO science, and it is going to be once again contributing to phenomenal growth in the growth of your business. Phenomenal growth will come if you do it with the strategy I'm going to tell you. Okay, past batch participants have started growing their businesses once again just on the basis of SEO. After they finished Google ads, they plugged SEO and their business started booming left, right, and center. Then in week 18. I'm going to talk about analytics ROI strategy. यहां पर हम बात करेंगे कि एजेंसी की गर्दन पकड़ के धंधा या काम निकलवाना कैसे है. अब आपको ये समझ में आएगा कि मेरी एजेंसी XYZ एक्टिविटी कर रही है बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी दैट यू हैव इवॉल्व्ड, दैट यू हैव डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड, और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उनको रिपोर्ट्स कैसे देखने हैं, क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, मेरे को हर हफ्ते 15 मिनट किन 6 रिपोर्ट्स के ऊपर या किन 3 रिपोर्ट्स के ऊपर या किन 10 रिपोर्ट्स के ऊपर स्पेंड करने हैं सो दैट आई कैन गिव देम इंस्ट्रक्शंस टू इंप्रूव माय ROI, to scale my growth. Okay, and if something is not working, immediately eliminate it from the marketing mix so that I stop burning money unnecessarily down the drain. So it is going to be ROI कैसे ग्रो करनी है और एनालिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे. And then in week 19, I'm going to talk about the science of sales follow-up. Okay, sales follow-up is going to once again completely alter the way you do sales. तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा था, सेल्स फॉलोअप के अंदर मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, तो हम कॉल कर रहे हैं, हम या हमारी सेल्स टीम पूछ रहे हैं, सर 1 हफ्ता हो गया, कुछ माइंड मेकअप करा आपने, सर 1 महीना हो गया, कुछ डिसीजन हुआ, सर 3 महीने पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था 3 महीने बाद बात करने के लिए, सर कैन वी स्पीक, हैव यू बीन एबल टू मेक अप योर माइंड. घुमा फिरा के यही 3-4 बर्बाद हमारे पास फॉलोअप के स्क्रिप्ट्स होते हैं, और इससे बर्बाद फॉलोअप की स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती. I gave you a glance, I gave you
some insight about follow-up के अंदर क्या करना है, कैसे करना है in today's YouTube marketing strategy. And I gave you 3 scripts, four scripts which are so flexible that you can create, if nothing else, at least 1 month of follow, just based on the scripts I've shared with you. And if you do it intelligently, you can create maybe 2-3 months of follow-up just based on the scripts I've shared with you. But guess what, in my week 19 5 months program, I'm going to put sales follow-up as well on steroids. इस sales follow-up के अंदर आप कैसे जो है मूवी टिकट्स यूज कर सकते हैं, डोनट्स यूज कर सकते हैं, केक्स यूज कर सकते हैं. एंड आई एम करेंटली वर्किंग ऑन सम so-called secret systems with one of my past batch participants. If this turns out to be a successful one, I'm going to start revealing it from my maybe next batch onwards. Okay, so you'll be blown away how simple this entire system is and how amazing the results are. Okay, so this is going to be about sales follow-up, and I'm also going to talk about how by creating simple 25 pieces of content, you will be able to generate the sales follow-up of for 1 whole year. पूरे 1 साल का आपका फॉलोअप का सिस्टम मैं आपका बनवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 25 कंटेंट पीसेस के अंदर बेसिस के ऊपर. और वो 25 कंटेंट पीसेस में बोलना क्या है, स्क्रिप्ट क्या होगी, वर्ड फॉर वर्ड फिल इन द ब्लैंक स्क्रिप्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. जैसे मैंने अभी आपको आज मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल स्क्रिप्ट शेयर करी है, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट डन फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेक a sticky note, write down the script, important points, just blurt it out in front of the camera, and it's done. Okay, so this is going to be such an easy system. The heavy lifting has already been done. I've done the entire hard work. I've created those scripts. I've done everything. All you need to do is plug in your name, plug in your company, plug in your numbers, and just state it in front of the camera, and it is done and sorted. Okay, and now finally in week 20, I'm going to talk about the ultimate business growth strategy. Okay, whatever we had discussed in the 20 weeks journey, 21 weeks journey, not everything is applicable for all businesses. I've already spoken that. अब मैं आपको इन 5 महीने के अंदर बोलूंगा कि आपके लिए हो सकता है 2, 3, 5, 7 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्रिटिकल हो बिजनेस ग्रोथ के लिए. आप सारी चीजें एक साथ डिप्लॉय करने की कोशिश मत करो. आप उसमें से कोई 1 या 2 या 3 चीजें पकड़ लो. इसके सेशन के अभी करंट सेशन के बाद भी मैं आपको बताऊंगा इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स. तो वहां पर आज मैं आपको बताऊंगा 4 डेज के अंदर हमने जो सेल्स साइंस डिस्कस करी है उसको इंप्लीमेंटेशन में कैसे यूज करना है. 5 मंथ्स के अंदर मैं आपको पहले से ही बता दूंगा वीक 1 के अंदर कि आपके लिए क्या क्या चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, सो दैट आप उसमें से कोई 1 या 2 चीजें पकड़ लो और 5 महीने में छाप दो. सो मेरे लिए पर्सनली 3 गोल्स हैं हर एक बिजनेस ओनर के लिए. गोल नंबर 1 कि सबकी लीड आनी शुरू हो जाए. गोल नंबर 2 कि सबकी वर्कशॉप इसी 5 महीने के अंदर फ्री हो जाए. एंड गोल नंबर 3 कि आप उसको मैसिवली स्केल कर सको, either within the 5 months duration and maybe eventually later on as well after 5 months workshop is over. So the third component that massively scale it up is going to be discussed in week 20. How do you scale this up and how do you put your entire science of marketing on almost complete autopilot? अगर आपको साइंस जैसे मैंने आपको बताई है, you can practically put all of this science on full autopilot. I would say 85 to 90% of it can be deployed on full autopilot, and then the remaining 10% है उसके अंदर कुछ strategic brainstorming होगी जो आपका weekly या fortnightly या monthly basis के ऊपर होगा, which would require initially 1 hour per week and then eventually it will cut down to 15 minutes per week. Flat, that's it, खत्म. इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं आपको इस सारे सिस्टम को डिप्लॉय करके इसको स्केल करने के अंदर. Okay, so this is going to be the journey of 21 weeks.